Good morning and Assalamu alaikum students. Today the date is 21st July 2020 and the day is Tuesday. We have started chapter number 5, Physical States of Matter. Last time we have discussed the laws related to gases. In these laws we have discussed about the Boyle's law and Charles law. There is a test yourself 5.2 related to the Boyle's law. Let's answer the question which are in test yourself 5.2. Note down the answer. 5.2, page number 79. Is the Boyle's law applicable to liquids? Answer: Boyle's law is not applicable to liquids. Second question: is the Boyle's law valid at very high temperature? Answer is: Boyle's law is valid at very high temperature. This is because temperature is kept constant in Boyle's law. Question number 3. What will happen if the pressure on a sample of gas is raised 3 times and its temperature is kept constant? Answer is: if the pressure on a sample of gas is raised 3 times and its temperature is kept constant, the volume will reduce to 1/3. क्योंकि हमें लास्ट टाइम ये प्रूव किया था कि अगर हम लोग प्रेशर को डबल करेंगे तो वॉल्यूम भी डबल रिड्यूस होगा. अगर हम प्रेशर को 3 टाइम्स इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो भी 3 टाइम्स डिक्रीज़ होगा. सो द वॉल्यूम विल रिड्यूस टू 1/3. नेक्स्ट इज़ द पिंक बॉक्स. In which units blood pressure is measured? Blood pressure is measured using a pressure gauge. It may be a mercury manometer or some other device. Blood pressure is reported by two values such as 120/80, which is a normal blood pressure. The first measurement shows the maximum pressure when the heart is pumping. जब हम ब्लड प्रेशर आप लोगों को फाइंड आउट करते हैं या मेजर करते हैं तो आपको ये फिगर बताई जाती है 120/80 इज़ अ नॉर्मल ब्लड प्रेशर. अब वो कह रहा है कि जो 120 है ये वो प्रेशर है जो हमारे हार्ट पर अप्लाई होता है जब उसने ब्लड को पंप करना होता है, जब हमारा हार्ट पंपिंग कंडीशन में होता है तब. इट इज़ कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर. When the heart is in resting position, the pressure decrease and it is the second value called diastolic. जब वो रिलैक्सिंग पोजीशन पे होता है तो वो 80 पे आ जाता है जो नॉर्मल है. बोथ ऑफ दिस प्रेशर आर मेजर्ड इन टॉर्च यूनिट्स. Hypertension is because of high blood pressure due to tension and worries in daily life. The usual criterion for hypertension is a blood pressure greater than 140/90. अगर आपका blood pressure 140/90 से ज़्यादा है तो it means that you are in the hypertension condition. Hypertension raises the level of stress on heart and on blood vessels. तो आपके जब hypertension होती है, जब आपका ब्लड प्रेशर 140/90 या इससे ज़्यादा होता है तो आपके हार्ट पर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई हो रहा होता है, ज़्यादा प्रेशर होता है आपके हार्ट पे. फिर वो ज़्यादा प्रेशर इसलिए ब्लड को पंप करता है. दिस स्ट्रेस इंक्रीज द सस्टेनेबिलिटी ऑफ हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक्स. ठीक है, इससे आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है और आप स्ट्रोक्स भी कंडीशंस भी अप्लाई हो सकती हैं. Next is the test yourself. There are the numericals which are related to the Charles law. We have in the Charles law we have proved that V1/T1 is equal to V2/T2. Here are the some numericals which are related to the Charles law. Example 5.3, page number 82. A sample of oxygen gas has volume of 250 cm³ at -30 degrees C. If gas is allowed to expand up to 700 cm³ at constant pressure, find out its temperature.
First of all, we will write the data. Volume V1 is equal to 250 centimeter cube and T1 minus 30 degree C. As in the last lecture we have discussed that we will always convert the degree C into the Kelvin. हमने उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है और केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बाय एडिंग 273 इन आवर फिगर. So minus 30 plus 273 is equal to 243 Kelvin and V2 is equal to 700 centimeter cube and T2 we have to find at as it is mentioned in the statement. So we have equation V1 over T1 is equal to V2 over T2. We have to find T2. T2 is equal to V2 T1 over V1. By putting the values we will find out the answer, that is 680.4 Kelvin. Thus expansion is caused due to increase in temperature. कि टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, पहले हमारे पास टेम्परेचर 243 था लेकिन फिर हमारे पास टेम्परेचर 680 आ गया. ठीक है, तो पहले हमारे पास जो वॉल्यूम था वो 250 था लेकिन V2 हमारे पास 700 आ गया. इट मीन्स क्या, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे जो वॉल्यूम है वो भी हमारा इंक्रीज़ करता जाएगा. नेक्स्ट इज़ द एग्जाम्पल 5.4. It is same like that of 5.3. You have to practice it by yourself. If you find any difficulty in understanding the numerical, you can highlight it. Remember, degree sign is used with Celsius scales, not with Kelvin scale. जो डिग्री का साइन है वो आपने C कैपिटल C के साथ यूज़ करना है, उसको K के साथ आपने यूज़ नहीं करना. Next is the test yourself 5.3. Which variables are kept constant in Charles' law? Answer is, in Charles' law, pressure and mass of gas are kept constant. Volume भी जैसे आप कहते हैं, ठीक है. Why volume of a gas decrease with increase of pressure? Answer is, the volume of a gas decreases with increase of pressure. This is because there are large empty spaces between their molecules. When pressure is applied on gas, the distance between the molecules decreases, due to which the volume is reduced. Question number 3. Why is what is absolute zero? Answer is, the temperature minus 273.15 degrees C at which an ideal gas would have zero volume is called absolute zero. Question number 4. Does Kelvin scale show a negative temperature? Kelvin scale does not show a negative temperature. Question number 5. When a gas is allowed to expand, what will be its effect on its temperature? When a gas is allowed to expand, its temperature will also increase. Last question is, can you cool a gas by increasing its volume? Answer, no. A gas cannot be cooled by increasing its volume. Here we have a pink box. In which units body temperature is measured? Body temperature is measured in Fahrenheit scales. Normal body temperature is 98.6 Fahrenheit. It is equivalent to 37 degrees C. This temperature is close to average normal atmospheric temperature. In winter, atmospheric temperature falls lower than that of our body temperature. और कॉमन ऑब्जर्वेशन है, सर्दियों में जो हमारा जो टेम्परेचर है बॉडी का, एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस हो जाता है एज़ कम्पेयर टू आवर बॉडी. अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ हीट फ्लोज आउट फ्रॉम आवर बॉडी एंड वी फील कोल्ड. To control this outward flow of heat, we wear black and warm clothes. To maintain body temperature, we use dry fruits, tea, coffee and meats etc. ठीक है. अब ये हीट फ्लो क्या होती है? हीट फ्लो इज दैट कि टेम्परेचर विल ऑलवेज मूव फ्रॉम द वार्मर टूवर्ड्स द कोल्डर साइड, कि वो हमेशा गर्म टेम्परेचर जो टेम्परेचर है हमारा वो एक वार्मर बॉडी से कूल बॉडी की तरफ मूव करेगा. तो वो कह रहा है कि सर्दियों में टेम्परेचर हमारा जो एटमॉस्फेयर का वो डिक्रीज़ हो जाता है, लेकिन हमारे जिस्म का जो टेम्परेचर है वो हाई होता है एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बाहरी टेम्परेचर मूव करता है, जिसकी वजह से हमें ठंड फील होती है, हमें सर्दी लगती है.
ठीक है, इट वॉज आवर ओवरऑल टूडेज लेक्चर. नोट डाउन द आंसर ऑन योर नोटबुक एंड लर्न दैम प्रॉपरली. अगर आपको फिर भी इन आंसर्स की कोई प्रॉब्लम आ रही है समझने में, तो आप उनको पॉइंट्स को हाईलाइट करें और इसको क्लियर करें. ओके, थैंक यू.